गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्कूल एजुकेशन रैंकिंग्स 2023-24। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। चंडीगढ़ जो है बेस्ट परफॉर्मर की तरह निकला है स्कूल एजुकेशन में फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 एज पर द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स टू रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है इसमें स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है असेस किया गया है बेस्ड ऑन 1000 पॉइंट्स। तो परफॉर्मेंस को जो है मल्टीपल डोमेन्स में मेजर किया गया है, चाहे वो लर्निंग आउटकम्स हो, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी, गवर्नेंस या फिर टीचर एजुकेशन हो। तो इसके थ्रू जो है इन रैंकिंग्स के थ्रू हम डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे। चंडीगढ़ जो है इस बार हाईएस्ट रैंक पर आया है और ऐसी अकेली ये स्टेट या यूटी है जो कि फिफ्थ हाईएस्ट ग्रेड पर है, प्रचेष्टा 1, जिसमें स्कोर इसका 719 आउट ऑफ 1000 आया है। चंडीगढ़ के बाद 10 अदर स्टेट्स और यूटीज़ हैं जो कि प्रचेष्टा 3 कैटेगरी में डाली गई हैं और ये रीजन्स जो हैं इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट में, जैसे एक्सेस टू एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशनल गवर्नेंस। मेघालय ने लोएस्ट स्कोर किया है और ये अकेली ऐसी स्टेट है जो लोएस्ट परफॉर्मेंस लेवल पर है। बाकी की स्टेट्स भी हैं जिन्होंने परफॉर्म पुअरली किया है और ये मोस्टली स्टूडेंट रिटेंशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। 14 स्टेट्स और यूटीज़ जो है वो आकांक्षी 1 कैटेगरी के में आई हैं। ये रीजन्स जो है इन्होंने मॉडरेटली वेल परफॉर्म किया है और इनमें कंसिडरेबल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बिहार और तेलंगाना जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया है एक्सेस टू एजुकेशन में। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना ने नोटेबल इंप्रूवमेंट दिखाए हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेटर अवेलेबिलिटी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन टॉयलेट्स और डिजिटल लर्निंग टूल्स देने में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस जो ओशन कॉन्फ्रेंस है वो अभी रिसेंटली फ्रांस में होल्ड की गई है और कंक्लूड की गई है। ये 56 आउट ऑफ 60 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट को, जिसको हम हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। तो ये यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये फोकस कर रही है एक्सेलरेट करने को ग्लोबल एक्शन टू प्रोटेक्ट ओशंस, खासकर इंटरनेशनल वाटर्स बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज में। इसको को होस्ट किया गया है फ्रांस और कोस्टारिका द्वारा। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ने जो है सपोर्ट किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। अब बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी क्या है, जिसको हम हाई सीज ट्रीटी कहते हैं। यूएन क्लॉज के अंदर एक ट्रीटी है जो 2023 में साइन हुई थी, ताकि जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व और सस्टेनेबली बचाया जा सके। और इसका एम है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को एस्टैब्लिश करना, ताकि ओवर फिशिंग रुक सके और डीप सी माइनिंग जो है इन ग्लोबल कॉमन्स में भी जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है सपोर्ट करती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी, जिसका टारगेट है कि 30% ऑफ मरीन और कोस्टल एरियाज़ को बाय 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। अब 160 कंट्रीज़ ने साइन कर दी है ये BBNJ ट्रीटी, लेकिन 56 ने ही अभी तक रेटिफाई किया है। अगर इस ट्रीटी को इन्फोर्स होना है तो 60 रेटिफिकेशंस की ज़रूरत होगी। उसके 120 दिन के बाद ये ट्रीटी लीगली बाइंडिंग बन जाएगी। तो इस अगर एक बार ये लीगली बाइंडिंग बन गई तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एस्टैब्लिश होंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो हाई सीज एक्टिविटीज़ के लिए मैंडेटरी होंगी। एक्सेस रेगुलेट होगा मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज में। कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इंडिया ने और ना ही यूएस ने अभी तक इसको रेटिफाई किया है, बट इंडिया इसको जल्दी कर देगा रेटिफाई। यूएन कह रहा है कि लगभग 70 रेटिफिकेशंस बाय सितंबर 2025 इसको देखने को मिलेंगी। और प्लान्स ये भी हैं कि फर्स्ट COP जो है BBNJ ट्रीटी की वो भी कंडक्ट की जाए लेट 2026 में। अब डिस्प्यूट्स क्या हैं? मोस्ट कंटेंशियस डिस्प्यूट ये है कि जो कमर्शियल बेनिफिट्स आते हैं मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से हाई सीज में, उसको कैसे शेयर किया जाए। ये जो है क्योंकि नेशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर के एरियाज़ हैं। अब खासकर जो एग्जॉटिक मरीन लाइफ है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, कोई ग्लोबल एग्रीमेंट नहीं है उसको रेगुलेट करने का। तो ऐसे कोई ना तो प्लान है और ना ही कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स है ऐसे एक्सट्रैक्शन पर। तो ट्रीटी के जो कंजर्वेशन गोल्स हैं वो अंडरमाइन हो सकते हैं। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो एक सीरियस थ्रेट है ओशन हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी को।
अब इसके जो है अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस में क्या अचीवमेंट्स रही हैं। यूरोपियन कमीशन ने 1 बिलियन डॉलर जो है ओशन कंजर्वेशन, 1 बिलियन पाउंड जो है वो आई एम सॉरी 1 बिलियन यूरोज जो हैं वो ओशन कंजर्वेशन के लिए प्लेज किए हैं। जर्मनी ने 100 मिलियन यूरोज प्लेज किए हैं। न्यूजीलैंड ने 52 मिलियन डॉलर्स प्लेज किए हैं। इटली ने 6.5 मिलियन यूरोज प्लेज किए हैं और कनाडा ने 9 मिलियन जो है वो ऐसे ही प्लेज दिए हैं। तो फ्रेंच पोलिनेशिया जो है उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का प्लेज दिया है। स्पेन ने कमिट किया है कि वो 5 न्यू मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाएंगे। अब इसमें ही ऐसे दो इम्पॉर्टेंट कोलिशन सामने आए हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर क्वाइट ओशन, जिसको 37 कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है। पनामा और कनाडा ने इसको लीड किया है ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को कॉम्बैट किया जा सके। ऐसे ही कि यूएन एजेंसी का कलेक्टिव इनिशिएटिव है वन ओशन फाइनेंस, जो कि फंडिंग को मोबिलाइज करना चाहता है ब्लू इकोनॉमी सेक्टर्स के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बाजाऊ ट्राइब। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च ने रिवील किया है कि जो बाजाऊ ट्राइब्स हैं उन लोगों के स्प्लीन्स जो है वो एवरेज से 50% ज़्यादा हैं, जो उसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा से डाइव कर पाते हैं ओशंस में और ज़्यादा जो है वो लंबे टाइम रह पाते हैं ओशंस में। तो बजाऊ ट्राइब, इनको हम सी जिप्सीज या सी नोमैड्स कहते हैं। सुलू आइलैंड रीजन जो सदर्न फिलीपींस का है वहाँ पर ये पाए जाते हैं और ये ट्राइब इवेंचुअली जो है वो वाटर्स ऑफ मलेशिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया तक फैल चुकी है। बजाऊ जो है वो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्री डाइविंग कैपेबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। ये 20 से 30 मीटर डीप तक चले जाते हैं ओशंस में और लगभग अपनी सांस को 5 से 13 मिनट तक रोक लेते हैं। ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इनके जो स्प्लीन्स हैं वो 50% लार्जर हैं देन ऑर्डिनरी पीपल। वुडन पोल हाउसेज में या हाउस बोट्स में रहते हैं जिनको हम लेपा लेपा कहते हैं और बिटवीन आइलैंड्स ही मूव होते रहते हैं, डिपेंडेंट है ऑन द सी। फिशिंग इनकी सेंट्रल है लाइफस्टाइल के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन सिंधु। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली ऑपरेशन सिंधु चलाया है इंडियन नेशनल्स को ईरान से बचाने के लिए। लगभग 10,000 इंडियंस वहाँ पर अभी भी हैं और उसमें से 6,000 लगभग स्टूडेंट्स हैं। इन द फर्स्ट लैग ऑफ ऑपरेशन लगभग 110 स्टूडेंट्स को बचाया जा चुका है नदन ईरान से और येरेवन आर्मेनिया के थ्रू उनको बाय रोड जो है बुलाया गया। और गवर्नमेंट ने एक 24/7 कंट्रोल रूम भी दिल्ली में इस्टेब्लिश किया है। एम्बेसी जो है तेहरान में इंडिया की, उसने 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन भी बनाई है सिटीजन्स को असिस्ट करने के लिए ग्राउंड पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुक आइलैंड्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड ने रिसेंटली मिलियंस ऑफ डॉलर जो है बजट फंडिंग जो है कुक आइलैंड को सस्पेंड कर दी है क्योंकि जो है कुक आइलैंड जो है वो अपने टाइज इम्प्रूव कर रहा है चाइना के साथ। कुक आइलैंड जो है ग्रुप ऑफ 15 स्मॉल आइलैंड्स है जो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है साउथ पैसिफिक ओशन में। तो ये हाफ वे बिटवीन हवाई और न्यूजीलैंड में पड़ता है। तो ये कैप्टन कुक के नाम पे इसको रखा गया है जिसने इन्हें एक्सप्लोर किया था 1773 में। नदर्न ग्रुप ऑफ 6 आइलैंड्स और सदर्न ग्रुप ऑफ 9 आइलैंड्स में इसको डिवाइड किया गया है। डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। अवारुआ यहाँ की कैपिटल है। सेल्फ गवर्निंग आइलैंड कंट्री है जिसका एक फ्री एसोसिएशन है न्यूजीलैंड के साथ। और कुक आइलैंड जो है वो कुक आइलैंड के जो लोग हैं वो न्यूजीलैंड के सिटीजनशिप होल्ड करते हैं और वो उनका फ्री एक्सेस मिलता है न्यूजीलैंड में और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जाने का। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच प्रोजेक्ट। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में वो एक इको फ्रेंडली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट में, जहाँ पर 200 इलेक्ट्रिक ऑटोज़ जो हैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कर रहे हैं, जिसको सपोर्ट किया जा रहा है सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच प्रोजेक्ट द्वारा। अब ये पायलट अप्रोच प्रोजेक्ट है क्या? इसका एम है कि यूएन हैबिटेट्स की कमिटमेंट को एड्रेस किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया जाए सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट में। 28 सिटीज़ फ्रॉम 11 कंट्रीज़ को इसमें जो है सपोर्ट दिया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जो कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे और डिक्रीज़ हो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यूनिडो द्वारा और जिसमें फंडिंग असिस्टेंस मिलती है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के थ्रू, और इसमें क्लोज कोऑपरेशन हो रहा है इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। तो इसमें भोपाल, गुंटूर, मैसूर, विजयवाड़ा और जयपुर में कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं।
अब यूएन हैबिटेट क्या है? फोकल पॉइंट है सभी अर्बनाइजेशन और ह्यूमन सेटलमेंट मैटर्स का विद इन द यूएन सिस्टम, और ये यूएन जनरल असेंबली द्वारा मैंडेटेड है कि सोशली और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल टाउन्स और सिटीज़ बनाएं, और हेडक्वार्टर इसका नायरोबी में है. ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is School Education Rankings 2023-24. This topic is important for your governance section. So Chandigarh has been adjudged as the best performer in school education for the academic year 2023-24 as per the Performance Grading Index 2.0 report. So this upgraded framework has assessed as school educational quality across states and union territories on a scale of 1000 points. So it has measured performance across multiple domains like learning outcomes, access, infrastructure, equity, governance, and teacher education. So this PGI 2.0 aims to enable data-driven policy making, promote evidence-based interventions, and encourage states or UTs to improve learning environments and outcomes in schools. So Chandigarh has secured the highest rank this year, becoming the only state or UT placed in the fifth highest grade, Pracheshta 1, with a score of 719 out of 1000. Following Chandigarh, 10 other states and UTs were placed in the Pracheshta 3 category. So these regions have demonstrated consistent performance in indicators like access to education, infrastructure development, and educational governance. Meghalaya has scored the lowest in the PGI 2.0 with 417 points and was the only state placed in the lowest performance level Akanshi 3 category. Other states like Bihar, Assam, Telangana, Jharkhand, Tripura, etc., they have also performed poorly because they have primarily struggled with issues related to student retention, basic infrastructure, and governance related challenges. 14 states and UTs, including Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal, Himachal Pradesh, they were placed in Akanshi 1 category. These regions have performed moderately well, but still there is considerable scope for improvement. Bihar and Telangana showed the most progress in access to education. Delhi, Jammu Kashmir, Telangana made notable improvements in school infrastructure with better availability of drinking water, electricity, clean toilets, and digital learning tools. Okay. So the next topic is UN Ocean Conference. This topic is important for your environment section. United Nations Ocean Conference, which was held in France, concluded with 56 out of the required 60 countries ratifying the BBNJ agreement, also known as the High Seas Treaty. So this UN Ocean Conference focused on accelerating global action to protect oceans, especially international waters beyond the national boundaries. It was co-hosted by France and Costa Rica, and the conference sought to support the implementation of Sustainable Development Goal, which is basically life below water. So what is BBNJ Treaty? It was adopted in 2023. It is also known as the High Seas Treaty. It's an international agreement under the UN clause focused on conserving and sustainably using the marine biodiversity. It is aimed to establish marine protected areas to prevent overfishing and deep sea mining in these global commons. So the conference of supports the Convention on Biological Diversity, which targets protecting 30% of marine and coastal areas by 2030. So, though 160 countries have signed the BBNJ treaty, only 50 have ratified it so far. The treaty requires 60 ratifications to begin a 120-day countdown before it becomes legally binding. Once it becomes legally binding or enforced, there will be a mandate to create marine protected areas beyond national jurisdiction, mandate environmental impact assessments for high seas activities, regulate access to marine genetic resources, provide capacity building support for developing countries. India has not ratified it, but it is in the process, and US has also not ratified the treaty yet. So UN anticipates that there will be 70 ratifications by September this year, and plans are also in place to host the first COP for this BBNJ in late 2026. So what are the key hurdles to the PBNJ treaty? The most contentious issue is how to share the commercial benefits arising from the marine genetic resources found in the high seas. These areas lie beyond national jurisdictions, so which makes
it difficult to establish ownership or profit sharing mechanisms. There is also lack of consensus on extraction, how the exotic marine life will be extracted. There is no clear global agreement on regulating such activities. So, without a ban on strict controls on extraction, the treaty's conservation goals will be undermined. Critics are also warning that continued or unregulated extraction poses a serious threat to ocean health and biodiversity, defeating the treaty's purpose. Okay, so European Commission has also pledged. So, what are the key achievements of United Nations Ocean Conference? So, European Commission, Germany, New Zealand, Canada, and Italy, they have allocated certain funding for the ocean conservation. French Polynesia has pledged to establish the world's largest marine protected area. Spain has committed creating 5 new marine protected areas. Similarly, High Ambition Coalition for a Quiet Ocean has been launched by 37 countries led by Panama and Canada to combat ocean noise pollution. A UN agency collective initiated the One Ocean Finance process to mobilize funding from the blue economy sectors. Okay. So the next topic is Bajau tribe. This topic is important for your social issues. So researchers have revealed that Bajau's tribe's spleen are 50% larger on average than those of the general population, which makes it which a natural adaptation which allows them to have or to live longer and deep diver. So Bajau are also called the sea gypsies or sea nomads. They come from the Sulu Island region in the southern Philippines, and because of their nomadic sea life, this tribe eventually spreads into the waters of Malaysia, Brunei, and Indonesia. They are renowned for their extraordinary free diving abilities. Without using any modern diving gear, they can dive deep into the depths of 20 to 30 meters and hold their breath for 5 to 13 minutes. Bajaus have spleen, which are on an average 50% larger than those of the ordinary people, which is a natural adaptation which helps them to dive deeper and longer. They live in wooden pole houses and houseboats, which are called lepa lepa. So they move between islands entirely dependent on the sea for food, income, and daily needs. Fishing remains central to their lifestyle. Okay. So the next topic is Operation Sindhu. This topic is important for your security section. So India has recently announced launching Operation Sindhu to evacuate Indian nationals from Iran, and more than 10,000 Indians are currently Iran, out of which 6,000 are students. 110 Indian students have been successfully evacuated and transported by road to Yerevan, Armenia. To oversee the operation, the government has established a 24/7 control room in Delhi. Embassy of India in Tehran has also set up its own 24/7 emergency helpline to assist citizens on the ground. Okay. So the next topic is Cook Islands. This topic is important for your international relations. New Zealand has recently suspended millions of dollars in budget funding to Cook Islands because the relationship between the two countries is deteriorating after the island group is deepening its ties with China. So Cook Island is a group of 15 small islands which are spread over 2 million square kilometers in the South Pacific Ocean. These islands are situated in the Polynesian Triangle, about halfway between Hawaii and New Zealand. They are named after Captain Cook, who explored them in 1773. So these islands are divided into a northern group of 6 islands and a southern group of 9 islands. The distance between the two island group is enormous. Their capital is Avarua, and it's a self-governing island in free association with New Zealand, which allows them to have New Zealand citizenship and enjoy the right to freely access New Zealand and Australia. Okay. So the next topic is Sustainable Cities Integrated Pilot Approach Project. This topic is important for your environment section. So Guntur in Andhra Pradesh has embraced an eco-friendly transformation in waste management by deploying over 200 electric autos for door-to-door garbage collection, which is supported by the Sustainable Cities Integrated Pilot Approach Project. This project aims to address UN Habitat's commitments to support the Government of India in promoting sustainable urban planning and management. So it aids 26 cities from 11 countries
The primary objective is to foster an environment conducive to investments in green infrastructure. These investments are intended to decrease greenhouse gas emissions. It is being implemented by the United Nations Industrial Development Organization with funding assistance from the Global Environment Facility and in close coordination with the Ministry of Housing and Urban Affairs. The implementation of the project is underway in 5 pilot cities: Bhopal, Guntur, Mysore, Vijayawada, and Jaipur. So, what are the key facts of UN Habitat? It is the focal point for all urbanization and human settlement matters within the UN system. It is mandated by the UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all. And its headquarters is located in Nairobi. That is in uh, which where, it is its headquarters located in Nairobi. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.